Good morning students and welcome to the class. Today we are going to start our new chapter in our English grammar book, chapter number 10, and the name of the chapter is verbs plus ing. Verbs plus ing. Verb means yes. Verb means action words or doing words. What we are doing, that is known as doing words, or we can say verbs or action word. जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं, that all are the word. Very good, because we have read earlier about it. Now what is verb plus ing? Okay, verb plus ing means you add ing to the verb. Okay, so when we use verb plus ing, हम verb के साथ ing कब लगाएंगे? To talk about action that is happening now. Now means present या अभी. जब आप बात कर रही हैं, जब आप कोई बात कर रहे हैं, when you talk about action, जब आप किसी एक्शन की बात कर रहे हैं, that is happening now, जो कि तब हो रहा हो. The work is going on. Happening means जब वो काम हो रहा हो, that time will you use verb plus ing. Okay, understand? For example, if you ask me or someone asks you that what I am doing, then I will say I am teaching. I am teaching means मैम आपको अभी पढ़ा रही हैं. Means जब आपको मैम ने बोला कि मैं पढ़ा रही हूँ, उस टाइम मैम वो काम कर रही है. मैम अभी पढ़ा रही है. मैम is teaching. So we have used here teaching. Then मैम will say teach. Teach is a verb. And what we use, और वो काम जब आपने बोला तब हो रहा है, that time we use ing. We use ing. So it will be teach plus ing. Then what I will write? Teaching. What I will write? Teaching. Okay? Now you are studying. आप क्या कर रहे हैं? आप स्टडी कर रहे हैं. और आप अभी कर रहे हैं जब ये बात हो रही है, then action जो प्रोग्रेस में है, the action is progress. Study plus ing. Then it will be study. More example we can see here. Ravi is eating apples. If someone is asking what Ravi is doing, Ravi क्या कर रहा है, और आप कह रहे हो मैम रवि एप्पल खा रहा है, means the action is happening. Action हो रहा है. So you will say eat. We will use ing. Eat is verb. Eat हमारी verb है, action word, and we have used ing. Ravi is eating apples. Ravi is eating apples. Next, what Sarah is doing? There is a girl and you are saying that Sarah is reading book. Sarah book पढ़ रही है, means अभी पढ़ रही है, action हो रहा है. So we will say Sarah is reading book. Read ing. Reading. Understand? To talk about action that is happening now. ऐसा कोई भी action जो अभी हो रहा है, we use verb plus ing. Talk, talking, sleep, sleeping, walk, walking, laugh, laughing, smile, smiling, like this. Now we will see the rules. अब हम rules देखेंगे कि ing हमें कैसे use करना है. Okay students? Yes. Now we are looking for rules. Rules for verb plus ing means how should we use ing with the verb. So first rule is some verbs. For the some verbs, just add ing. कुछ verbs होते हैं उनमें हमें सिर्फ ing add करना होता है. Like sing. Sing. Sing is a verb and I have used here ing. And it will be sing. Singing. Sing means गाना गाना. Singing means गा रहा है. It's happening. जब action अभी हो रहा है, so we are using ing singing.
Ravi is sleeping. ing. सो रहा है. This is the first rule. Okay. Now we will see the second rule. Second rule is, see on the board carefully, verbs that end with e. ऐसे verbs जिसके लास्ट में क्या आता है? e. For example, come, come. लास्ट में what is in the last? लास्ट लेटर क्या है? e. लास्ट में e आ रहा हो, dance, 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 e. Last letter is e. Dance. Verbs that end with e. ऐसे verbs जिसमें लास्ट लेटर e होता है, लास्ट में e आता है, what we do? तो उनका ing हम कैसे बनाएंगे? remove e. remove means हटा दो. remove means हटा दो. क्या हटा देंगे? e. तो हम इस कम में से e को हटा देंगे. ओके, we will remove e and it will be come, and here dance, e. We will remove e, it will be dance, and add ing. After that उसके बाद हम ing add करेंगे. means come, लास्ट में e है, तो हमने अभी रूल सीखा है remove e, तो e को हटा दिया, it will be com. Then we will add ing, then it will be coming. He is coming, वो आ रहा है. ओके, coming. dance, dance. e. remove means हटा दो. e हटा दिया लास्ट का. जब भी हम ing लगाएंगे, whenever we will use ing, we will remove e and add ing. हम e हटा के ing लगाएंगे. dancing. If I ask, what is your sister doing? आपकी सिस्टर क्या कर रही है? Then you will reply me, मैम वो डांस कर रही है. She is dancing. She is dancing. क्योंकि जब आप मुझे बता रहे हैं तब वो ये काम कर रही है. So here will be ing, dancing. Understand? Now the third rule, verbs where second last letter. Second last means, if I write here apple, apple, apple. Last letter is e. और लास्ट से जस्ट पहले जो लेटर आता है, that is second last. Understand? That is second last. लास्ट लेटर से जस्ट पहले वाला जो लेटर होता है, that is second last. So verbs where second last. ऐसे verbs जिसका second last means cut. Last letter is t. Last letter क्या है? t. But they are talking about second last letter. They are talking about second last. Second last means u. जो last letter से just पहले आता है. Okay? And here swim. Last is m, तो second last क्या होगा? I. Where second last letter is vowel. अगर second last letter vowel होता है, means last letter t, second last vowel. Vowel means 5 vowels are there. A, E, I, O, U. अगर इनमें से A, E, I, O, U इनमें से कोई भी अगर second last letter में होता है, U is also a vowel. And I is also a vowel. अगर किसी word में second last is a vowel, तो हम क्या करेंगे? Last letter is repeated. तो जो लास्ट में लेटर है उसको हम एक बार और लिखेंगे. Repeated means दोबारा लिखना. So what we will do? cut. हमने cut ऐसे कैसा लिख दिया? और अभी हम ये रूल पढ़ा है, अगर सेकंड लास्ट वाउल है तो हम लास्ट लेटर को एक बार और लिखेंगे. So we have written t again. cut again t, वापस t लगा दिया.
Then add ing. Then we have add ing. C-U-T. Last letter T है, वो हमने रिपीट करके दोबारा लिख दिया. Then ing. Then it will be C-U-T-T-I-N-G. Cutting. C-U-T-T-I-N-G. Cutting. For example, S-W-I-M. Swim. S-W-I-M. Swim. Last letter M, second last is I. और हमने देखा सेकंड लास्ट अगर वाउल होता है तो हम लास्ट लेटर को रिपीट कर देते हैं. तो हमारा लास्ट लेटर यहाँ पे है M. तो हमने M इक्वल O लिख दिया. अगेन वी हैव राइट M. S-W-I-M. Then again M. I-N-G. Now what is the letter? S-W-I-M-M-I-N-G. Swimming. They are swimming. वो तैर रहे हैं, वो स्विम कर रहे हैं पॉन्ड में. So we will say they are swimming. I hope all of you understand. Verb plus ing we are using when the action is happening. अगर action हो रहा है, that time we use ing with verb. 3 rules we have seen. Simply we use ing. But if there is last e, if the last word letter is e, तो हम e को remove कर देते हैं. Then we use ing. Talking, dancing. But if the second last letter is vowel, अगर second last letter vowel होगा a e i o u, then we repeat the last letter. तो हम last letter को repeat करके लिखते हैं. Then we use ing. And will be swimming. I hope all of you understand this. This was verb plus ing when the action is going on at the time of talking. Okay students, thank you. Goodbye.